चलो, now we are going for a parallel combination of currents. Parallel combination of the rods का we are doing. Before we done series combination, now we are going for parallel combination of rods. Okay, so उसमें क्या फर्क है, क्या है, we'll see. So parallel combination of rods में rods कैसा रहेगा? Parallel combination rods में rods कैसा रहेगा? Is one rod, other rod, two rods है. And इसमें क्या है? Whenever heat will flow, whenever there is a temperature difference, right? T1, T2. Whenever temperature difference, the heat will transfer from one rod to other rod. This is called parallel combination. Like we studied in resistance, right? Parallel combination, I say. Okay. इसका now area of cross section is A1, area of cross section is A2. इसका thermal resistance is R1, इसका thermal resistance is R2, and the thermal conductivity is K1, thermal conductivity is K2. Okay, this is called parallel combination. Now our interest is to calculate what? R equivalent and K equivalent. That's it. ये दोनों इंटरेस्ट है बस. तो आपको कंबाइन करने का, राइट, टू गेट R equivalent and K equivalent, I'll combine to one rod. I'll combine to one rod. इसका area is A1 plus A2. Okay, and length तो same है, L only. And इसमें क्या है? Heat current is flowing, H current is flowing. देखो इसमें K equivalent and R equivalent, right? This is the thing. A1 plus A2 combine किया. Our interest is to calculate that only. Now here we talk about heat currents. You know, current ka, tell me, this current will be same or different? Tell me. Here H is coming. यहाँ का इधर split होगा ना, इधर भी split होगा. So when the currents are splitting, there is nothing but parallel combination. Current is not same. Current is not same. So either I call as H1, I called H2. When the current is getting divided, you can able to identify that it is a parallel combination. Okay. And you know, H is equal to, relationship क्या है? H equal to H1 plus H2. यहाँ कर दोनों ऐड किया तो we'll get H. Right? Now इसमें parallel combination में R equivalent तो simple है. Analogy से बोल सकते हो. How to find R equivalent? 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. R equivalent. This formula will be same. And series में R1 plus R2 कैसा है? ये भी you know, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Now I want to calculate K equivalent now. K equivalent. How to calculate K equivalent? Tell me. Now I am using this formula. 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay. What is R equivalent formula? Thermal resistance का formula क्या है? L by K, right? R equivalent means L by K A, right? K equivalent into A is how much here? इसका A1 plus A2. This is 1 by R equivalent is equal to 1 by R1. R1 क्या है? First connector का tell me. L by KA. L by K. A1 into A. Getting a plus 1 by L by K2 into A2. Now इसमें which one is getting cancelled? L. So when I reciprocal, K equivalent into A1 plus A2 is equal to K1 A1 plus K2 A2. Therefore, K equivalent का formula है K1 A1 plus K2 A2 by A1 plus A2. This is a formula for K equivalent of a parallel combination. K1 A1 plus K2 A2 by A1 plus A2. And area of the first conductor means area of the first conductor का ही लेने का. We should not add something again. Okay, A1 is what? First conductor का area. A2 is second conductor का area. This is a formula for K equivalent. Copied? चलो.
न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूला क्या ना? सर हाँ, K1 A1 plus K2 A2 by K1 plus K2 A1 plus A2. ओके सर। चलो ना क्वेश्चन करो। करो। Sir, welded together means like the area is the same. Area is the same. Yes. Then it's D. देखेंगे। Yeah, sir D. या दिया है फिर से। A cylinder of radius r of material thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell. ऊपर शेल है, इनसाइड ये वाला ए कंडक्टर का मटेरियल इज देयर। इसका रेडियस इज r, इसका रेडियस इज 2r। द कंबाइन टुगेदर, ये वाला पैरेलल है ना, हीट करंट इज गेटिंग स्प्रेडेड, राइट? ओके, इज टेलिंग व्हाट द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट इज आस्किंग, दैट्स इट। इन टर्म्स ऑफ K1 K2 में आएगा। बचपन का K1, ये वाला था K2। So K1 plus 3 K2 by 4. by 4. हाँ, यस करेक्ट। So 1 second. ये करो। Yeah, so K1 plus 3 K2 by 4. I go to the washroom. आ गया आपको भी? फॉर्मूला क्या है? K1 A1 plus K2 A2 by K1 A1 plus A2। K area of the first one and second one should be subtract करने का, राइट? आया कुछ आपको? K1 plus 3 K2 by 4, या। Now next concept, growth of ice on lake। ये सुना होगा ना? Yeah. फॉर्मूला भी याद है? So फॉर्मूला याद rho है? L D square by 2K theta. रो एल D square by वाई 2K स्क्वायर। theta. ओके, देखेंगे क्या देखेंगे। देखो, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। लेक में ये आइस ग्रो करता जा रहा है। ओके, आइस इज गेटिंग फॉर्म्ड लेयर टू लेयर, लेयर हर एरिया में लेयर। वाटर पहले पानी था, बाद में आइस इज गेटिंग फॉर्म्ड स्लो बाय स्लो, स्लो बाय स्लो, स्लो बाय स्लो। ओके, नाउ मान लो आइस फॉर्म टिल वाई डिस्टेंस तक आइस फॉर्म हो गया। लेयर से, टॉप लेयर से वाई डिस्टेंस तक आपको आइस फॉर्म हो गया। ओके, नाउ इन डी टाइम में मान लो y thickness of the ice is formed।
इन dt टाइम में y dy thickness of the ice is getting formed. Our intention is to find time, कितना टाइम में कितना तक थिकनेस तक आइस फॉर्म होगा बोल के वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, कितना टाइम में कितना थिकनेस तक द आइस विल बी फॉर्म्ड. यू टेल मी व्हेन द आइस इज गेटिंग फॉर्म, आपको दो चीज, आइस विल रिलीज द एनर्जी और नॉट, heat energy will be released, then only ice is getting formed, and that heat energy is getting conducted outwards. Okay, so ice का कैसा, what is the condition here? Q released for ice, heat जब release होगा then only ice is getting formed, is equal to Q conducted. Okay, ये मान लो इसका स्मॉल मास है, डीएम मास है, डीएम मास ऑफ दिस लेयर. ओके, सो इन टाइम dt में dy ice is formed बोल के वी आर अज्यूमिंग, इन टाइम dt में dy थिकनेस ऑफ द ice is formed, उसका मास इज dm. ओके, नाउ व्हाट इज द फार्मूला? q रिलीज्ड, फार्मूला क्या है? ml इज द फार्मूला, ml latent heat of fusion. So m is what? dm into L is equal to Q conducted. I am talking about कितना कंडक्ट किया होगा. So फॉर्मूला क्या है? Q का फॉर्मूला Ka, what is the formula K का? Ka delta T by L into T, right? Now tell me thermal conductivity is K only. Okay, area कौन सा एरिया we are talking about? This one, right? ये पूरा ऐसा एरिया, ये पूरा एरिया ना, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इधर भी ऐसा रहेगा ना, ऐसा नहीं तो पतला रहेगा, ऐसा रहेगा, दैट एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट. सो के ए डेल्टा थीटा इज व्हाट, टेल मी, द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट? हायर माइनस लोअर, 0 आउटसाइड मान लो माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, सो डेल्टा टी कितना होगा? 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा विल बी थीटा. के डेल्टा थीटा बाई थिकनेस, कितना एरिया का कंडक्शन हो रहा है? वाई थिकनेस में कंडक्शन हो रहा है ना, वाई इंटू टाइम इज dt, राइट? नाउ व्हाट इज dm in terms of density? dm is, tell me, dm is density into volume कितना होगा? टेल में, वॉल्यूम इज आपको एरिया इंटू थिकनेस, राइट? एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम और नॉट? समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया में, दिस एरिया ए, राइट? तो डेंसिटी वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस इज व्हाट? dy. सो एरिया इंटू dy. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग dm के जगह में वो सब करो, रो इंटू ए इंटू dy सब करो, रो dm के जगह में सब्स्टिट्यूटिंग a dy into L is equal to Ka theta by y into dt. Okay, so a cancel. So from this, what is dy by dt will be how much? dy by dt is K theta by rho Lv. K theta by rho Lv. Our intention is to what to find? Time taken from some thickness to some thickness find करने के लिए आपको कितना टाइम लगा. आइस इनिशियली सम सेंटीमीटर्स में रहेगा, बाद में इतना सेंटीमीटर्स होने के लिए कितना टाइम लगा बोलते वी हैव टू यूज द फार्मूला, उसके लिए डेरिव कर रहे हैं. सो dy by dt is K theta by rho Lv, Ly. आया तक? ओके, नो देखो इसको, देखो dt है ना, रीअरेंज करके we can apply the limits and we'll get the time. Okay, our intention is to find time, right? So therefore I rearrange time taken by the ice to grow to a thickness y. Suppose पूछा, मतलब इनिशियल 0 है, y thickness बनने के लिए कितना टाइम लगा? So क्या करेंगे हम लोग? we get from this, देखो from this dt is equal to क्या आएगा? dt is equal to rho Ly dy by k theta, right? So इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू y है ना, ये पूरा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, y का 0 टू y लगाने का विल गेट t इक्वल आ जाएगा ना, देखो t इज इक्वल आ जाएगा रो l बाय k थीटा बाहर आ जाएगा, 0 टू y dy. इफ यू सॉल्व रो l बाय 2 k थीटा y स्क्वायर.
So the answer is rho L by 2k theta y square. Or This is from 0 to thickness y. so that But gives suppose time, if right? they ask Rho L y, by 2 rho L by 2k theta into y square gives time. rho L by 2k theta will give, Time into y square gives time. y square gives time, yes. And suppose if the thickness is increased from y1 to y2, they will mention 1 centimeter, 2 centimeter. That means you have to use, we have to apply the formula integration from y1 to y2. That means here time is directly proportional to y2 square minus y1 square. Very important. ये आपको यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में. Time is proportional to y2 square minus y1 square. ये लास्ट व्हाट इज द रेशियो ऐसा पूछे तो यूज इट. There. Yeah. Now understood, right? आपको मतलब ये फार्मूला से आपको मतलब ये फार्मूला भी रिमेम्बर किया तो यू कैन डिराइव कर सकते हैं आप. ये फार्मूला रिमेम्बर किया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन पुट द लिमिट्स एंड यू कैन गेट द थिंग. और डायरेक्टली यू कैन रिमेम्बर दिस फार्मूला आल्सो डायरेक्टली. T is equal to rho L by 2k theta into y2 square minus y1 square. Okay. चलो इक्वेशन करो. रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द थिकनेस ऑफ द आइस टू ग्रो फ्रॉम 0 to 1 सेंटीमीटर करने के लिए कितना टाइम लगा. 1 to 2 सेंटीमीटर करने के लिए कितना टाइम. 2 to 3 सेंटीमीटर में कितना टाइम लगा. रेशियो वांट. रेशियो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस, राइट. थिकनेस ऑफ द आइस फॉर्म्ड. So 1:3:5. 1:3:5. टाइम इज प्रोपोर्शनल टू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, राइट. सो फर्स्ट वन क्या है. 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. सो दैट मीन्स 1:3:5 ऑड आ रहा है. ओके. ये टाइम टेकन मतलब आपको वो सेंटीमीटर आने के लिए वन एंड सेकंड से मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर आने के लिए 3 गुना बढ़ता जा रहा है. टाइम टेकन इज मोर. इनिशियली थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाद में टाइम बढ़ता जाएगा. ओके. चलो. बाय दिस कंडक्शन डन. बाय दिस कंडक्शन डन. कन्वेक्शन. कन्वेक्शन कुछ नहीं, एक ही डेफिनेशन. कन्वेक्शन 1 मिनट में हो जाएगा. कन्वेक्शन में देयर इज नो फॉर्मूला, नथिंग. कन्वेक्शन मींस टेल मी. See, all three are mode of heat transfer only. First में the molecules are heating and vibrating and going, the energy is going, right? But the molecules are not going from one place to other place. Heat is getting transferred. Conduction में. Convection में कैसा होगा देखो. Conduction में क्या होगा. It is a mode of heat transfer when actual motion of matter. The particles will move, start moving. Particles start moving. कैसा देखो, एक ओवन है, पानी है. If you heat, what will happen? The particle का density कम हो जाएगा. The particle itself will rise. The matter is moving now from one place to other place. And उस जगह में दूसरा particle will come. Again it will take the heat and again it will go. Like it will circulate. This is called convection. Okay. It is possible only in fluids. Natural fluid moves due to density difference. Because of density difference only the fluid started moving. गर्म करता गया तो आपको पानी देखेगा ना, ऐसा जूम रोटेट होता जाएगा. That is called convection. And forced fluid is moved by means of external force like fan, blower. Say forced, convection we are doing. In this में क्या होगा, difference क्या है? Energy transfer दोनों में होगा, but mass transfer will takes place only in convection. The particle is actually moving. Mass transfer is taking place in convection. The difference. खत्म. Convection done.
Done. Yes, done. Sure, 1 minute. Next one will be radiation only. Radiation is only 3 laws पढ़ने वाला है radiation में. Kirchhoff laws, Wien's displacement law, Stephen's laws. खत्म. Done. Yes, sure. Yeah, चलो. Radiation. Radiation. Now, how the energy is getting transferred from this? Tell me, radiation में. How the heat energy is getting transferred? Sir, as waves. As electromagnetic waves जैसा transfer होगा अभी. Okay. So, like, examples of we'll see, right? Okay, चलो. Radiation. It is a mode of heat transfer in which heat energy is transferred in the form of electromagnetic waves, mainly infrared waves. Like heat waves are infrared waves. So उसके through the heat is getting transferred. Like sun से earth को heat कैसा आ रहा है? Through the electromagnetic waves के वजह से. Okay. So that is nothing but radiation. The process is called radiation. Okay. And no medium is required इसमें. मतलब medium required जरूरत नहीं है radiation में. And travels at a speed of light. Involves emission, absorption, reflection of electromagnetic waves. सभी होगा इसमें. Emission होगा, absorption होगा, reflection of electromagnetic waves will be happening. This. These all things about radiation. No, इसका formulas will be there. Radiation में तो formulas will be there. Different laws are Yes, there. done. वो learn करना. Sir, done. Done? Okay, चलो. Examples I told her, heat from the sun reaching the earth, no need of writing. Heat felt near the fire even without touching the air. आपको बाजू में फायर आ रहा है, आपको गर्म हो जाएगा. That is how the heat is reaching from one place to other place through the radiation method only. Electromagnetic waves ka वजह से only we are getting our bodies getting heated. Infrared radiations from hot bodies. उसके वजह से भी आपको these are nothing but radiations only. These are all examples of radiations. So understood that basic difference. Convection में particles, actual particles will move. Conduction में particles will vibrate and transfer the energy. But इसमें electromagnetic waves के through the heat is getting transferred. Radiation. Done. Next class में thermal properties of matter and mechanical properties of fluids का formulas I'm going to ask. Complete formulas. Learn करके रखो, by heart करके रखो.
चलो नेक्स्ट. फर्स्ट वन इज Prevott's theory of heat exchange. Radiation में first basic theory they given Prevott's theory. Tell me anything you know about Prevott's theory? Heat losses, heat gain. So Prevott's theory क्या बोल रहा है? That any body in the universe, कोई भी body हो, आप, हम, black body, anything, any body, it will always emits radiations and it will always absorb radiation. दोनों हो जाएगा, दोनों हो रहा है. Any body में. That is a basic thing of Prevott's theory. Radiations means which are the heat which is coming out from the body and it will take also. Parallel दोनों simultaneously हो रहा है. Okay. So Prevott's theory क्या बोल रहा है? It say that every material body, any body, at any temperature above absolute zero, radiates heat to the surroundings. At the same time, absorbs heat from the surrounding. दोनों साथ साथ होगा. Radiate भी होगा, absorb भी करेगा. Okay, and the rate of thermal radiations emitted per unit time depends on surface area, nature of emitting surface, temperature of emitting surface. वो कैसा emit करेगा, क्या emit करेगा, depends on the surface area of the object, nature of the emitting surface, temperature of the emitting surface. Now then ये दोनों हो रहे हैं ना, then temperature of the body increasing means tell me when the temperature of the body will increase? Heat of emission will be greater than absorption or absorption is greater than emission? Heat. Emission is greater than absorption. That time temperature will be decreasing or increasing? Increasing. No. Emission मतलब heat दे दे रहा है. If the heat is giving, क्या होगा? उसका energy is heat energy getting lost. मतलब cool हो रहा है. So क्या होगा? This condition is important. देखो. Q emission is greater than Q absorption. Temperature of the body decreases. Emission ज्यादा हो रहा है, heat energy दे रहे हैं, the body का temperature decreases. अगर ज्यादा absorb कर रहे हैं, the temperature of the body getting increased. दोनों हो गए तो the temperature of the body is constant. Generally हमारा bodies का ऐसा रहेगा. Emission and absorption is equal. That's why आपका temperature thermometer से आपका body देखेगा तो temperature is constant. आप emit भी कर रहे हैं and radiate मतलब absorption भी कर रहे हैं. This is a Prevott's theory. Radiations के बारे में basic theory he told. लिख लो. Done. So 1 second. Yeah, so done. Yes. Done. Okay, चलो. Now, interaction of radiations with matter. देखो, when the thermal radiations fall on the body, three things will happen. एक absorb भी करेगा,
ट्रांसमिट भी करेगा एंड रिफ्लेक्ट भी करेगा. 3 things will happen, right? When the body radiation is falling on the any body के ऊपर, आपको रिफ्लेक्टेड भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा, ट्रांसमिट भी कर देगा. ओके, बेस्ड ऑन दिस वी हैव दिस वन. देखो, टोटल हीट इज नथिंग बट Q of he absorbed, Q of reflected, and Q of transmitted. Right? This is the total heat absorbed, total heat on the body. Radiations falling on the body. Q of absorbed, कितना heat reflect किया, कितना amount of radiations emitted, and कितना amount of radiations transmitted. I divided with Q each and every term. Okay, so 1 is equal to QA by Q, QR by Q, and Q2 by 2. What is QA, QR, and QT? Q, what? Q is Amount of absorbed wala, amount of radiations absorbed by the body. QR is amount of radiations reflected by body. QT is amount of radiations transmitted by the body. It will transmit. Okay, pass karega. That is nothing but this one. Now इसका एक एक का terminologies are there. इसका names are there. वो learn करेंगे. So what is computer? so this part of just writing the formula is enough, right? Formula is enough. That's it. Q is equal to QA plus QR plus QT. I am dividing each and every term with a Q say. So that's why 1 is equal to QA by Q, QR by Q, QT by Q. Now इसका क्या क्या नाम से देखो QA by Q Sir, को can you go we represent as backwards? Okay, sir. now QA by Q को we call as absorptance or absorbing power. Very important. A we represent as small a. A क्या है, कितना radiations absorb हुआ by total number of radiations falling on it if you divide. And similarly QR by Q is nothing but we represent as small r. इसको क्या बोलते हैं, reflectance or reflecting power बोलते हैं. So कितना reflect हुआ upon total radiations falling on it. Similarly Q transmitted we represent as small t, QT by Q, transmitting power बोलते हैं. So therefore this total is 1, right? So A plus R plus T is equal to 1. These are all ratios, all right? So R, A, T. A is QA by Q, R is QR by Q, QT by Q. These all values should be always equal to 1. उसमें important one क्या है, ये वाला absorbing power. कितना absorb किया by the body, radiations falling on it, absorb किया upon the total radiations falling on it. If you divide, we'll get absorbing power बोलते हैं. मेजर इंटेंशन क्या है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में वी आर स्टडीइंग. फॉर दिस ओनली द थियरी केम इनटू, द 3 थियरीज केम इनटू पिक्चर. ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज आर रिक्वायर्ड, देन ओनली वी कैन स्टार्ट द ब्लैक बॉडी. इफ दे टेल फाइंड द एब्जॉर्बिंग पावर और एब्जॉर्प्टेंस फाइंड करो बोल तो कितना बॉडी एब्जॉर्ब किया अपॉन द टोटल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, डिवाइड करो, विल गेट द एब्जॉर्बिंग पावर. Yes, sir. कब बेटा ऑन द वीडियो विशा. डन. चलो नॉट टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज लर्न करेंगे बॉडी के ऊपर क्या क्या है. फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमिसिव पावर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूजफुल होगा क्वेश्चंस में. एमिसिव पावर
means heat radiated by a body per unit surface by per unit surface area per unit time is called as emissive power. Very important. emissive power क्या है? कितना heat, suppose एक body है, it will emit radiations, right? It will emit radiations coming out from the body. Okay, so what is emissive power says? Emissive power is heat radiated by a body. Suppose मान लो total heat radiated by body is Q. So heat radiated by a body per unit area per unit time. This is called emissive power. Heat radiated by body per unit area per unit time is called as emissive power. Q by AT. And SI units क्या होगा? Q is joules and meter square second. So उसको watt per meter square. So emissive power is how much heat radiated by body per unit area per unit time is called as, like this is nothing but intensity on, right? Intensity is, you know, heat radiated by upon unit area unit time is called intensity. And you know, E depends on what? E depends on, very important, emissive power depends on wavelength and temperature also. Okay, wavelength पर depend होगा. मतलब see, these radiations are different wavelengths are coming, right? All are not same wavelength. एक बार different wavelength red आएगा, blue आएगा, violet आएगा, वो एक एक का एक एक wavelength. Suppose I want, suppose ये वाला red आ रहा है, ये वाला blue आ रहा है, suppose मुझे emissive power of the red का radiations क्या चाहिए, then क्या करेंगे? आपको emissive power of a particular lambda, nothing but heat radiated of that particular lambda upon area upon time is nothing but emissive power. It depends on wavelength and temperature. What does E lambda represent? What does E lambda represent? It depends upon the wavelength. Emissive power depends on wavelength. Wavelength का symbol क्या है? Lambda. Emissive power of particular wavelength पूछेगा तो आपको heat radiated of particular wavelength by area into T. So emissive power of particular wavelength बोल के लिखो. Emissive power of particular wavelength is called as emissive power. Very important. And this emissive power only depends on temperature, right? आपको आगे आएगा. This emissive power is proportional to T power 4 बोल के आपको आगे आने वाला है. Stephen's law. Emissive power, that Q by AT only. They will tell that only from there. Instead of telling emissive power, they will tell Q by AT depends on T power 4. Sigma बोल के आएगा उधर. Okay. So very important. Understood, right? Emissive power is heat radiated by a body. मतलब एक body है पूरा heat generate कर रहा है. Heat radiations are coming out upon area into time per unit area per unit time is called as emissive power. This is very important. Okay. आगे. Now black body. Black body के बारे में we have to learn. Black body means, according to you, the body should be black. It absorbs all radiation. That's it, or any other? Krisha बोलो, chapter हो गया ना. Black body means क्या है? So it will absorb and emit all the radiations that it receives. But absorb and radiation same, that is Prevert's theory, right? Prevert's theory मतलब नहीं है. देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक है. क्या बोलते हो? Black body means, first of all, it is not necessary that the body is black. Okay. दूसरा क्या है? ऐसा condition where it absorbs all the radiations falling on it. अगर heat किया तो, that is one you have to mention. Whenever we heat the black body, it emits all the radiations. It emits all the radiation. That is the black body का. दो definitions are there. Okay. So black body लिखो. Sun is example of black body and star is also examples of black body. देखो, ideal black body absorbs all radiations falling on it completely at any temperature and any incident angle. Any incident angle में, any temperature में अगर body के ऊपर गिरे तो पूरा absorb कर देगा radiations को.
that body we call as black body. This is first definition. उसमें absorbing power कितना है? Absorptance is 1 because कितना ऑब्जर्व किया? पूरा ऑब्जर्व किया ना, दैट्स व्हाई A is 1. समझ में आया? A is A मालूम है ना? फॉर्मूला क्या है? QA by Q. कितना ऑब्जर्व किया? पूरा ऑब्जर्व कर लिया, दैट्स व्हाई 1. एंड जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो ट्रांसमिटेंस. एंड सेकंड डेफिनेशन क्या है? पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड, अगर मैं हीट करूंगा ब्लैक बॉडी को at suitable high temperature, it emits all type of radiations possible wavelength. पूरा emit करेगा, zoom zoom zoom. That type of body is nothing but black body. Two definitions of it. And no body can emit heat radiations more than perfectly black body at a given temperature. इस black bodies से ज्यादा radiations no other body is there. No other body emits इतना radiations like black body. So what's the difference between emission and reflection? Mm-hmm. Difference between emission and reflection. Difference between emission and reflection. Yeah. Emission means क्या है? Tell me. Reflection means एक body के ऊपर टकरा गए तो then only it will reflect. Body के ऊपर heat करने के बाद. Emission means one body, any body will emit radiations. If you heat, right, the radiations which are coming out will be the emission without any hitting का कुछ नहीं है. Reflection means एक आने का hit करके जाने का. That is called reflection. Okay. Done? Yeah. Now practical black body. Can we prepare black body? Can we prepare black body? मतलब पूरा ब्लैक मार दूंगा बोलते वो ब्लैक बॉडी नहीं है. ब्लैक बॉडी मीन्स सम कंडीशन, राइट? आपको पूरा ऑब्जर्व करेगा ना. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. देखो ब्लैक बॉडी, ये वाला आपको एक एनक्लोजर बनाया. एनक्लोजर क्या है? पूरा इनसाइड पूरा ब्लैक कलर दे दिया एंड इधर स्मॉल ओपनिंग बनाया, स्मॉल ओपनिंग. ओके, सो एंड वी नॉच ऐसा तो बनाया, ऐसा कुछ वी नॉच शार्प नहीं, थोड़ा बेंड करके बनाया वी नॉच. ये पूरा uneven surfaces है. So क्या होगा? When I incident radiations inside it get trapped हो जाएगा. इधर multiple reflection होता जाएगा, उल्टा जाएगा, but it will not come out. That's why we consider this as black body. Okay, so इसका देखो, when a radiation enters a small hole, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. When a radiation enters the small hole, it undergoes multiple reflections inside the cavity. Inside the cavity, multiple reflections होगा inside. With each reflection, most of the energy is getting absorbed. Pure energy is getting absorbed and very little radiation is coming back out. Okay, a hole appears black and behaves like a black body. That's why we consider this body as a black body. Okay, this is very important. मतलब आपको this is isothermal enclosure बोलते हैं उसको. Isothermal enclosure. Isothermal means temperature constant. Okay, and some more practical bodies are there. देखो, lamp black. This also we consider as a black body, like 1% of reflection. And graphite is also 3% reflection होगा. That is also we consider black body. Platinum or gold black, this also we consider as black body. Okay, ये वाला सबसे ज्यादा near ideal black body will be this one. The examples, these are the examples of black body. ये लिखने की जरूरत नहीं है, just understand. ये आकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके वो बाहर नहीं आने देगा. सो दिस इज सैटिस्फाइंग डेफिनेशन, राइट? दिस इज सैटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. सो ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 3 लॉस. कौन सा है? वन इज, बोलो बोल सकते हैं, Wien's displacement,
Stefan Boltzmann something. Stephen's Well, Boltzmann I laws. forgot. Okay. Yes. So these are the three different laws we have to know.